Are you confused about Phenon? Don't worry, I got you. In this lecture, we will discuss Phenon in the simplest way possible and compare Kemp and Gilly, Sneath and Sokal. No boring theory, just clear concepts, quick understanding. Let's make systematic zoology super easy. Outlines. Alright guys, first we will understand what a phenon actually is. Then we will break down using Kemp and Gilly's concept. After that we will move to the modern approach by Sneath and Sokal. And finally we will look at simple real life examples so you never forget it again. So stay till the end. This topic is going to be crystal clear. Lecture outcomes. By the end of this lecture, you will master the concept of phenon. You will understand how Kemp and Gilly and Sneath and Sokal explained it. Super simple, no confusion. You will learn how to group organisms using similarity, differentiate, qualitative and quantitative approaches, and even interpret dendrograms. Let's dive in and make taxonomy easy. According to Kemp and Gilly in 1943, a phenon is a group of organisms based on observable similarities in their characteristics. एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से। आपके क्लास में मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। जो मेल्स होते हैं उनकी मस्टाशिज और बियर्ड मतलब दाढ़ी और मूंछें होती है। इनके बाल छोटे होते हैं, इनके मेमोरी ग्लैंड्स लेस डेवलप होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप फीमेल्स को देखें तो इनके बाल लंबे लंबे होते हैं, मस्टाशिज नहीं होती है और न उनकी बियर्ड होती है और इनके मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। तो दोनों को अगर आप जनरली ऑब्जर्व करें और देखें तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। आप उसको जब फिजिकल अपीयरेंस को देखें तो उसमें डिफरेंसेस हैं। तो मेल जो है ये एक फिनॉन है और फीमेल दूसरी फिनॉन है। हालांकि दोनों एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, होमोसेपियंस। फिर अगर आप यंगस्टर्स को देख लें और बूढ़ों को देखें, दोनों को अगर एक साथ खड़ा कर दें तो आपको बच्चों की दाढ़ी मूछें नजर नहीं आएगी और बड़ों की जो बूढ़े हैं उनकी सफेद दाढ़ी और मूछें नजर आएगी और इसी तरह बाकी भी डिफरेंसेस आपको नजर आएगी। तो अगेन आप इसको देखिए, ये भी आपको लगेंगे कि ये डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, दोनों एक ही स्पीशीज है, लेकिन यहाँ पर एज डिफरेंस है। तो जो बच्चे हैं उनको आप देखिए अलग फिनॉन है और जो बूढ़े हैं ओल्ड एज के हैं वो एक अलग फिनॉन है। तो इन दो मिसालों को जहन में रख के आपके लिए आगे आसानी होगी। सो जो डेफिनेशन केम्प एंड गिली ने की, दिस मीन्स organisms are grouped simply by how they look, such as color, shape or size, without considering their evolutionary relationships. तो इसमें कोई evolutionary relationship हम नहीं देखते, बल्कि जाहिरी जो शेप कलर साइज नजर आता है उसको हम उस पर फोकस करते हैं। So this is phenon focus is on phenotypes, physical appearance, not on genetics or ancestry. Genetics या ancestry को नहीं देखा जाता बल्कि phenotype को देखा जाता है। For example, different color forms of garden snails can be grouped into separate phenons based on their visible differences. तो ये garden snail आपको नजर आ रहा है। अगर आप इनकी visible differences को देखें तो उनको आप different phenon में like this is different phenon, ये अलग phenon है और ये अलग phenon है। इनकी shell pattern को देखिए, कलर को देखिए, हालांकि होंगे एक ही species के। So this concept was introduced to describe variation within a species and to avoid mistakenly classifying these variations as different species. Let's understand phenon with a simple example of sexual dimorphism. In Indian peafowl, males are large, brightly colored and have a long decorative tails, while females are smaller and dull in color. Similarly, in Asian quail, males are glossy black, whereas females are brown and heavily spotted. तो इसमें आप देखिए इवन टेक्सोनोमिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, हालांकि ये सिर्फ फेनोटाइपिक डिफरेंस है, दोनों एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, एक मेल है और एक फीमेल। सो एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो
This is different phenon, this is different phenon, but still they belong to the same species. So although these males and females look very different, they belong to the same species. So based on their observable differences in appearance, they can be grouped into different phenons. This shows that phenon classification depends only on visible characteristics, not on genetic or evolutionary relationship. Take a close look at these two plants. They look almost identical, right? Both have four petals, both have four sepals. So naturally you might think they must be closely related. But here is the shocker. These two belongs to completely different orders and not closely related at all. Evening primrose family Onagraceae, mustard family Brassicaceae. This is called a phenon, a grouping based only on superficial similarity. And here is the big lesson for you. Similarity does not always means relationship. In real classification, scientists go deeper. They study structure, development, and evolutionary relationship. Because taxonomy is not just about what you see, it is about what is biologically true, and that is how real science works. Now let's understand the concept of phenon according to Sneath and Sokal 1973. A phenon is a group of organisms classified together based on overall similarity, which is usually determined using numerical methods. In this approach, many characteristics of organisms are measured and then their similarity is calculated. Organisms with the highest similarity are grouped together into phenons. These relationships are often shown using a dendrograms. In this diagram or in this dendrogram, each branch represents an organism. When two organisms join early, it means they are very similar. If they join later, it means they are less similar. So closer branches indicate greater similarity. In simple terms, this method focuses on measurable traits and use numerical analysis without considering evolutionary history or evolutionary relationship. So these are based on overall similarity, phenotype. Then they use quantitative or numerical analysis and then focus on measurable traits, not evolutionary history. So A1 is an animal, A2 is animal, A3 is animal, C1, D1, B1, B2, D1, D2. तो जो पहले ज्वाइन करेगा इसका मतलब है कि ये D1 एंड D2 ज्यादा सिमिलरिटी है इनके दरमियान, B1 B2 के दरमियान और ज्यादा सिमिलरिटी है, C1 और D1 के दरमियान और ज्यादा सिमिलरिटी है, A3 और A2 ज्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू A1. नाउ A1 A2 A3 यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो इनकी सिमिलरिटी यहाँ कम हो रही है. फिर C1 और D1 ये ज्यादा सिमिलर है और ये बाद में ज्वाइन कर रहे हैं B1 B2 को, लेकिन B1 B2 D1 और D2 इनसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ज्यादा सिमिलर है, और ये ग्रुप दोनों यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर सिमिलरिटी डिक्रीज हो रही है. इन द सेम आखिर में दोनों ज्वाइन हो गए हैं तो यहाँ पर सिमिलरिटी मजीद कम हो चुकी है. तो जो ज्यादा करीब होंगे ब्रांचेस में वो इतने ज्यादा सिमिलर होंगे और वो एक फिनॉन से उनका ताल्लुक होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू क्रिएट फीना in a very simple way. Phena is the plural of phenon. And step 1, measure characters. Scientists record many traits such as size, color, number of legs, etc. And step 2, calculate similarity. Each organism is compared with other and a similarity score or percentage is calculated. And step 3, group similar organisms. Organisms with the highest similarity are placed together in cluster. These clusters are called phenom. And step 4, show a diagram. These relationships are shown in a dendrogram.
which is a tree-like diagram. In this diagram, closer branches means more similar organisms. A very simple analogy is grouping students by marks. Students with similar marks come in the same group, and the more similar they are, the closer they appear in the group. So, like grouping students based on mark similarity, students with similar marks, same group. More similar, close in group. This is a dendrogram. A dendrogram is a tree-like diagram grouping similar organisms together. Starting point, different organisms are placed at the bottom. Now joining together. Closer branches mean more similar organisms. Mean if organisms join early, they are very similar. Similarity score, the higher the branches join, the less similar. So if they join later, the similarity is less. Let's quickly compare Kemp and Gilly with Sneath and Sokal, which is very important for examinations. Basic या basis of classification. तो कैंप इन गिली का जो तरीका था वो था ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटी फिनोटाइपिक तरीका था. स्नीथ एंड सोकॉल का था ओवरऑल सिमिलरिटी बट स्टिल इट वाज फिनोटाइपिक. नो इवोल्यूशन, नो जेनेटिक्स. मेथड यूज्ड, यहाँ पर कैंप इन गिली सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन करते थे, जबकि स्नीथ एंड सोकॉल ने न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड इंट्रोड्यूस करवाए. अप्रोच यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच था, जबकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव अप्रोच था. डेटा हैंडलिंग, जनरल ट्रेट्स लाइक शेप, साइज, कलर, जबकि यहाँ पर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विद कैलकुलेशंस थे. इवोल्यूशन कंसिडर्ड, नो, न कैंप एंड गिली ने कंसिडर किया और न स्नीथ एंड सोकॉल ने. फोकस, विजुअल रिजेम्बलेंस को देखा जाता था, जबकि यहाँ पर डिग्री ऑफ सिमिलरिटी जो कि कंप्यूटेड होती थी, जिसको मैयर किया जाता था, कैलकुलेट किया जाता था. नेचर, basic early concept, or this was advanced modern phonetic approach. Alright guys, that's a wrap on today's lecture. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share with your friends. Check out the link on screen and drop your questions in the comments. I will respond to each one. See you in the next lecture. Keep learning, keep growing.